हेलो गाइस। तो आज का चैप्टर है बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन। तो जितने भी क्वेश्चन मतलब ऐसे डिस्कस किया जाएगा ये सब प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है डिफरेंट एग्जाम में, एंड दूसरा यूनिवर्सिटी और स्टेट का क्वेश्चन है। तो सब इनिशिएटिव को ही फॉलो करते हैं। तो शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। द येलोइश फ्लूइड colostrum secreted by mother. Yellowish fluid colostrum secreted by mother during the initial days of lactation has abundant antigens, antibodies, allergy, oncogenes. Option B is correct. Antibodies. Rich antibodies. So the yellowish fluid colostrum secreted by mother during initial days of lactation is abundant in antibodies. Abundant or rich in antibodies. Next question is, each mammalian hemoglobin molecule can carry a maximum number of dash molecules of oxygen. Each mammalian hemoglobin molecule can carry a maximum number of dash molecules of oxygen. So option B is correct. Four oxygen molecules. Next question is, which one of the following is not a part of ECG? तो ECG का जो होता है PQRS रहता है, तो इसमें Z ज़्यादा दिया गया है। PQRS TB रहता है, तो ऑप्शन Z इज़ इनकरेक्ट, इज़ नॉट ए पार्ट ऑफ ECG। तो ऐसे वेव को रिप्रेजेंट किया जाता है। आप लोग अगर ECG का जो ग्राफ देखे हो तो इसमें ऐसे लिखा रहता है PQRS, ऐसे ग्राफ बना हुआ रहता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, blood vessel A has thick wall, narrow lumen and no bulbs, while blood vessel B has thin wall, wide lumen and half have bulbs. Here A and B are. So A and B are, option A is correct. A is artery, B is vein. Next question is, which of the following blood types can be infused into a recipient of a positive group? So which of the following blood types can be infused into a recipient of a positive group? A positive, AB positive, O positive, O negative. तो ऑप्शन बोला है, which of the following blood types can be infused into a recipient of a positive group. तो ऑप्शन ए भी करेक्ट है एंड सी भी करेक्ट है, डी भी करेक्ट है, तीनों करेक्ट ऑप्शन है। ए पॉजिटिव जो है ये भी मतलब रिसीव करता है। ए पॉजिटिव ब्लड कैन रिसीव्ड बाय ए पॉजिटिव रेसिपिएंट, एंड ओ पॉजिटिव जो है ए सी डी तीनों करेक्ट है। एंड ओ पॉजिटिव ब्लड ऑल्सो कैन बी रिसीव्ड ए पॉजिटिव रेसिपिएंट्स, एंड ओ नेगेटिव ब्लड ऑल्सो कैन बी रिसीव्ड बाय ए पॉजिटिव रेसिपिएंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which one of the following is correct? कौन सा करेक्ट दिया हुआ है ऑप्शन में से? तो लिम्फ, प्लाज्मा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, ऑप्शन बी इज करेक्ट। ब्लड में प्लाज्मा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स सब रहता है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। प्लाज्मा जो है ये लिक्विड पार्ट ऑफ ब्लड, एंड आरबीसी जो है ये मतलब कैरी करता है ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड को, एंड डब्ल्यूबीसी जो है ये पार्ट ऑफ इम्यून सिस्टम, ये मतलब इम्यून रेस्पॉन्स करता है, इम्यून रेस्पॉन्स में हेल्प करता है। एंड प्लेटलेट्स जो है ये ब्लड क्लॉटिंग में रिस्पॉन्सिबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग ह्यूमन ऑर्गन्स इज ऑफन कॉल्ड एज ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी? तो ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी बोला जाता है स्प्लीन को, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी स्प्लीन को बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हिच ब्लड सेल इज रेस्पॉन्सिबल फॉर टी सेल एंड बी सेल immunities? T cell and B cell immunity, option A is correct. Lymphocyte. Which blood cell is responsible for T cell and B cell immunity? Option A is correct. Lymphocyte. Next question is, which one acts as a T cell growth factor? IL, interleukin 2, Th1 antibodies, natural killer cell. So option A is correct. Which one acts as a T cell growth factor? तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, इंटरल्यूकिन 2 सेल। इंटरल्यूकिन 2 इज ए टी सेल ग्रोथ फैक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, T cells
are activated by? T cells are activated by autoantibodies, inactivated antibodies, fragment of antigen, and intact antigens. Option C is correct. T cells are activated by fragments of antigens. Next question is proliferation. Proliferation of T cells in response to antigen presentation is accompanied by enlargement of lymph nodes, binary tree nodes, jet node, and DGF nodes. Option B A is correct, lymph nodes. Proliferation of T cells in responsible to antigen presentation is accompanied by enlargement of lymph nodes. Next question is iliac artery. Iliac artery carries blood to the lance, ilium, hind limbs, brain. Option C is correct, hind limbs. Iliac artery carries blood to the hind limbs. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, तो कुछ स्टेटमेंट दिया हुआ है एंड क्या बोला है, ए पर्सन कैन रिसीव ब्लड फ्रॉम ए बी एंड ओ ब्लड ग्रुप पर्सन्स. ए पर्सन कैन रिसीव ब्लड फ्रॉम ए बी ओ ब्लड ग्रुप पर्सन. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर द पर्सन. तो ऑप्शन दिया हुआ है, द पर्सन हैज़ ए बी एंटीजेंस ऑन आरबीसी, द पर्सन हैज़ ए बी एंटीबॉडीज इन प्लाज्मा, द पर्सन हैज़ ए बी एंटीजेंस ऑन आरबीसी. And statement 2 दिया हुआ है, the person has AB antibodies in plasma. Option A is correct, only one. The person has AB antigens in RBC. तो AB antigens की वजह से ये AB and O ब्लड ग्रुप रिसीव करता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which plasma protein is involved in coagulation of blood? Which plasma protein is involved in coagulation of blood? Oxytocin, albumin, fibrinogen, amylase. Option C is correct. Which plasma protein is involved in coagulation of blood? Option C is correct, fibrinogen. Next question is, which organ is called graveyard of RBC? तो ये पहले भी मिला है, स्प्लीन को ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी बोला जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, when a memory B cell is activated by antigen, it proliferates and differentiates into an T lymphocyte, helper T cell, plasma cell, memory MK cell. तो ऑप्शन C is correct, plasma cell. When a memory B cell is activated by antigen, it proliferates and differentiates into plasma cell. Next question is, weakness in muscles and increase in the fragility of red blood cell is caused by the deficiency of which vitamin? विटामिन दिया हुआ है, deficiency of vitamin E, S, C, D. तो क्वेश्चन बोला है, weakness in muscles and increase in the fragility of red blood cells is caused by the deficiency of which vitamin? तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ई. डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ई की वजह से. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, क्वेश्चन 17, नेम द ब्लड ग्रुप व्हिच डू नॉट हैव ए सरफेस एंटीजन. ऑप्शन डी इज करेक्ट, ओ. तो ए के पास ए एंटीजन है, बी के पास भी बी एंटीजन है, एंड ए बी के पास भी बोथ ए एंड बी एंटीजन है. एंड ब्लड ग्रुप ओ जो है ये डज नॉट हैव ए एंड बी एंटीजन ऑन द सरफेस. Next question is, the innervation. The innervation of heart is primarily meant for initiation of heartbeat, regulation of heartbeat, activation of pacemaker, release of acetylcholine. Option B is correct. The innervation of heart is primarily meant for regulation of heartbeat. Next question is, वाटर परसेंटेज इन प्लाज्मा इज. वाटर परसेंटेज ये लिक्विड है, ब्लड में पाया जाता है, तो वाटर परसेंटेज इन प्लाज्मा इज. ऑप्शन डी इज करेक्ट, 90%. ये एक लिक्विड कंपोनेंट है, ब्लड में पाया जाता है, उसमें 90% रहता है. तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एन इंक्रीज इन ब्लड फ्लो
to the atria. An increase in blood flow to the atria of the heart can cause the release of ANF. An increase in blood flow to the atria of the heart can cause the release of ANF. What is the full form of NF? तो फुल फॉर्म पूछा है, ऑप्शन ए इज करेक्ट होगा, एट्रियल नेट्रीयूरेटिक फैक्टर, नेट्रीयूरेटिक फैक्टर, एट्रियल नेट्रीयूरेटिक फैक्टर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग मेम्ब्रेन्स सराउंड्स द हार्ट? पेरिकार्डियम, प्लीura, mediastinum and diaphragm. Option A is correct, pericardium. Which one of the following membranes surrounds the heart? Pericardium. Pericardium membranes surrounds the heart. Next question is the pH, ब्लड का pH बताना है, तो ब्लड का pH है 7.4. तो ये स्लाइटली अल्कालाइन एनवायरनमेंट है, तो ये क्रिटिकल भी है एंजाइमेटिक फंक्शन के लिए. तो pH वैल्यू ऑफ ब्लड इन ह्यूमन बॉडी आर 7.4. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हार्ट ऑफ हार्ट इज, तो ये साइनोएट्रियल नोड को बोला जाता है. हार्ट ऑफ हार्ट इज साइनोएट्रियल नोड. नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए फादर हैज़ ब्लड ग्रुप AB. A father has blood group AB and mother have opposite blood group. The child is supposed to have which of the following blood group? तो इसका ऑप्शन ए इज करेक्ट होगा, ए और बी. फादर के पास है AB ब्लड ग्रुप, मदर के पास है O, तो चाइल्ड सपोज टू है कौन सा ब्लड ग्रुप होगा? ए नहीं तो बी. बी से कोई एक होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एंटीजेंस फॉर ABO and RH blood groups are present in plasma, WBC, RBC, platelets. Option C is correct. Antigens for ABO and RH blood groups are present in RBC. Next question is which muscle is immune? Which muscle is immune to fatigue? Stripped, unstripped, cardiac, voluntary. Option C is correct. Cardiac. Cardiac muscle is immune to fatigue. Next question is which of the following blood vessel secrete histamine? Basophil, acidophil, eosinophils and neutrophils. Option A is correct, basophils. Which of the following blood cell secrete histamine? Option A is correct, basophils. Basophils secrete histamine. Next question is the fetal hemoglobin dissociation curve is shifted to left compared to adult oxygen. Hemoglobin dissociation curve, this is due to Hamburger effect, Bohr effect, Halton effect and double Bohr effect. Option D is correct, double Bohr effect. Fetal hemoglobin dissociation curve is shifted to left compared to adult oxygen. Hemoglobin dissociation curve, this is due to double Bohr effect. Next question is which of the following pairs is biologically incompatible for marriage? तो biologically incompatible है for marriage के लिए, शादी के लिए. तो ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन बी करेक्ट होगा, RH पॉजिटिव मैन एंड RH नेगेटिव मैन. तो ये RH पॉजिटिव मैन एंड RH नेगेटिव वोमेन के लिए रिस्क हो जाएगा रेशियस इनकम्पेटिबिलिटी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी. Next question is substance to be added to the blood sample. Substance to be added to the blood sample draw from the patient for analysis of blood, corpuscle and plasma is. Substance to be added to the blood sample drawn from the patient for analysis of blood, corpuscles and plasma is heparin, sodium oxalate, ice cubes, calcium carbonate. तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, हेपारिन. हेपारिन जो है ये एक एंटी कोआगुलेंट है, तो ये प्रिवेंट करता है ब्लड मतलब क्लोटिंग में प्रिवेंट करता है. तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज ह्यूमन ब्लड ग्रुपिंग इज एन एग्जांपल ऑफ. ह्यूमन ब्लड ग्रुपिंग इज एन एग्जांपल ऑफ. ऑप्शन ए इज करेक्ट, 3 alleles governing a character. Human blood grouping is an example of 3 alleles governing a character. Next question is identify the hormone released by heart. Gastrin, secretin, erythropoietin. Atrial,
natriuretic factor. Option D is correct. Atrial natriuretic factor. Identify the hormone released by the heart. Option D is correct. Atrial natriuretic factor. ANF. Short form है ANF. Hormone released by heart. Atrial natriuretic factor. Next question is the letter T in T lymphocyte referred to. Letter T in T lymphocyte referred to thymus, thrombin, thrombocytes, tetanus. तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए इज करेक्ट, thymus. Letter T in T lymphocyte referred to thymus. Next question is blood group does not have any antigen. Question 35 is blood group does not have any antigen but possesses both AA and B antibodies. It is A O B AB. Option B is correct. O. A blood group does not have any antigen but possesses both AA and B antibodies. It is O. And option B is correct. Next question is CO is more toxic than carbon monoxide is more toxic than carbon dioxide because option दिया हुआ है it affects the nervous system, it affects the transporting oxygen capacity of hemoglobin. Option C, it affects the lungs. Option D, it form acid combining with water. तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी इज करेक्ट. कार्बन मोनोक्साइड इज मोर टॉक्सिक देन कार्बन डाइऑक्साइड बिकॉज it affects the transporting oxygen capacity of hemoglobin. Next question is which of the following is a special connective tissue? Which of the following is a special connective tissue? कौन सा स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू है? कार्टिलेज, ब्लड, हार्मोन, नन ऑफ दिस. तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, ब्लड. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू? ब्लड इज ए स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू. नेक्स्ट क्वेश्चन इज ह्यूमुलिन इज ए फॉर्म ऑफ काइटिन डाइजेस्टिव फर्मेंट, ह्यूमन इंसुलिन, एंटीबायोटिक. तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, ह्यूमन इंसुलिन. ह्यूमुलिन इज ए ह्यूमन इंसुलिन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज सीरम? सीरम क्या है? तो ऑप्शन दिया हुआ है प्लाज्मा ऑफ ब्लड, प्लाज्मा विदाउट फाइब्रिनोजेन, प्लाज्मा विदाउट Ca2 पॉजिटिव एंड नन ऑफ दिस. तो ऑप्शन व्हाट इज सीरम? ऑप्शन बी इज करेक्ट, प्लाज्मा विदाउट फाइब्रिनोजेन. सीरम इज ए प्लाज्मा विदाउट फाइब्रिनोजेन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच विटामिन इज एसेंशियल फॉर ब्लड क्लॉटिंग? Vitamin is essential for blood clotting. Vitamin A, C, K, E. So option C is correct. Which vitamin is essential for blood clotting? Vitamin C is correct. Vitamin K. Next question is LAC is produced as LAC is produced as secretion from body, excess oozing out of body, excretion from body, and feces of lac insect. Option A is correct, secretion from body. LAC is produced as secretion from body. Next question is which of the following blood groups belongs to the category of universal donor? तो यूनिवर्सल डोनर जो है ये ओ को बोला जाता है यूनिवर्सल डोनर. तो ओ नेगेटिव को यूनिवर्सल डोनर बोला जाता है. तो ऑप्शन सी इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज नॉर्मली ब्लड क्लॉट्स इन. तो ब्लड कितने मतलब मिनट्स के अंदर होता है? तो नॉर्मली ब्लड क्लॉट्स इन ऑप्शन बी इज करेक्ट, 6 to 10 मिनट्स के अंदर ब्लड क्लॉट हो जाता है, ब्लड जम जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट हैपेंस ड्यू टू द सिक्रीशन ऑफ ग्लूकागॉन? व्हाट हैपेंस ड्यू टू द सिक्रीशन ऑफ ग्लूकागॉन? तो अल्फा सेल ग्लूकागॉन को सिक्रेट करता है. तो बोला है व्हाट हैपेंस ड्यू टू द सिक्रीशन ऑफ ग्लूकागॉन. ऑप्शन दिया हुआ है इट इंक्रीजेज द लेवल ऑफ शुगर इन द ब्लड, इट रिड्यूसेज द शुगर लेवल इन द ब्लड, इट इंक्रीजेज द अमाउंट ऑफ ग्लाइकोजन इन द लिवर, द अमाउंट ऑफ कैल्शियम आयंस इन द प्लाज्मा falls. The amount of calcium ions in the plasma falls. So option A is correct. It increases the level of sugar in the blood. It increases the level of sugar in the blood. Next question is
हाउ मेनी चैम्बर आर फाउंड इन ह्यूमन हार्ट? तो कितना चैम्बर है ह्यूमन हार्ट में? टोटल 4 चैम्बर है। राइट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल। 4 है, 4 चैम्बर इन ह्यूमन हार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज who performed the first हार्ट ट्रांसप्लांट इन द वर्ल्ड? तो किसने फर्स्ट परफॉर्म किया था फर्स्ट हार्ट ट्रांसप्लांट इन द वर्ल्ड? लुइस पेस्च्योर, क्रिस्टियन बर्नार्ड, वेणुगोपाल राव, डॉक्टर क्रिक। ऑप्शन बी इज करेक्ट, क्रिस्टियन बर्नार्ड performed the first heart transplant in the world. Next question is blood is a, तो ब्लड क्या है, कौन सा टिश्यू है? ब्लड इज ए कनेक्टिव एपिथेलियल, नन ऑफ दिस एंड बोथ एंड बी। ऑप्शन ए इज करेक्ट, ब्लड इज ए कनेक्टिव टिश्यू। तो ब्लड इज ए कनेक्टिव टिश्यू बोला है, तो ये ब्लड जो है ये व्हिच फ्लोज लाइक ए फ्लूइड्स, इट इज ऑल्सो नोन एज फ्लूइड, ब्लड को फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू भी बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ई। विटामिन ई, ये विटामिन ई टोकोफेरोल को बोला जाता है, इसका केमिकल नेम है, एंड डेफिशिएंसी बोला है, डिजीज का नाम बोला है, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, इम्पोर्टियंस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए पर्सन विथ अननोन ब्लड टाइप, कोई एक पर्सन है उसके पास अननोन ब्लड टाइप है, तो इन द सिस्टम इज सफरिंग फ्रॉम ब्लड लॉस इन एन एक्सीडेंट एंड ब्लड ट्रांसफ्यूजन इज नेसेसरी. One of his friends has a valid certificate of blood type. He wants to donate bloods without delay. What would be the blood type of donor मिश्रा? तो कोई एक एक्सीडेंट हुआ है, तो इसका ब्लड अननोन है, किसी को मालूम नहीं है इसका ब्लड के बारे में, इसका ब्लड ग्रुप क्या है, तो उसको कौन सा ब्लड देने से अच्छा होगा? तो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट, ये मालूम होगा आप लोग का, टाइप ओ ब्लड, ये इज ए यूनिवर्सल डोनर, किसी को ब्लड ग्रुप को दे सकता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पीपुल हैविंग जेनोटाइप IA एंड IB, IA and IB, people having genotype IA and IB will show blood group as AB. This is because incomplete dominance isolation, option C is correct, codominance. People having genotype IA and IB will show blood group as AB. This is because codominance. Next question is which of the following has the blood with the lowest oxygen content? Which of the following has the blood with lowest oxygen content? Right ventricle, pulmonary vein, aorta, left atrium. Option A is correct, right ventricle. Which of the following has the blood with lowest oxygen content? तो right ventricle को lowest oxygen content है right ventricle में. Next question is which hormone stimulates the production of pancreatic juice and bicarbonate? Question 52, which hormone stimulates the production of pancreatic juice and bicarbonate? तो ऑप्शन दिया हुआ है गैस्ट्रिक एंड इंसुलिन एंड ग्लूकागोन, एंजियोटेंसिन एंड एपिनेफ्रिन. ऑप्शन डी दिया हुआ है कोलिसिस्टोकाइनिन एंड सिक्रेटिन. ऑप्शन डी इज करेक्ट, कोलिसिस्टोकाइनिन एंड सिक्रेटिन हार्मोन स्टिमुलेट्स द प्रोडक्शन ऑफ पैनक्रेटिक जूस एंड बाइकार्बोनेट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज valves that allow blood to flow from the ventricle to the artery and not in the opposite direction. Semilunar valve and tricuspid valve, semilunar valve, aortic valve and mitral valve, bicuspid valve and tricuspid valve. तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, semilunar valve. Valves that allow blood to flow from ventricle to the artery and not to the opposite direction. That is because semilunar valve. Next question is the mother and father of a person with blood group O mother and father of a person with blood group O have blood group A and B respectively. What will be the genotype of both the mother and father? तो ऑप्शन दिया हुआ है A mother is homozygous for blood group A and mother is heterozygous for B.
Option B is mother is heterozygous for blood group A and father is homozygous for B. Option C is both the mother and the father are heterozygous for blood group A and B. So option C is correct. Both the mother and the father are heterozygous for blood group A and B. Next question is the increased dissociation of oxyhemoglobin is said to be caused by increased CO2 concentration. The increased dissociation of oxyhemoglobin is said to be caused by increased CO2 concentration is Halden effect, Bohr effect, Hemsberger phenomenon, and chloride shift. So option B is correct, Bohr effect. The increased dissociation of oxyhemoglobin is said to be caused by increased carbon dioxide concentration due to Bohr effect. Next question is megakaryocytes are phagocytes found in lymph cells that produce antibodies against antigen, cells of bone marrow that produce thrombocytes, and cells found in between the spaces in lamellae of compact bone tissue. So option C is correct. Megakaryocytes are cells of bone marrow that produce thrombocytes. Next question is Rh factor is present in all vertebrates, all mammals, all reptiles, human beings, and rhesus monkey. Option D is correct. Rh factor is present in human beings and rhesus monkey. नेक्स्ट क्वेश्चन इज which विटामिन इज नेसेसरी फॉर ब्लड क्लोटिंग के लिए तो ये पहले भी मिला है विटामिन के इज एसेंशियल फॉर ब्लड क्लोटिंग. नेक्स्ट क्वेश्चन इज in what form of CO2 carbon dioxide is mainly transported in the blood? In what form is carbon dioxide is mainly transported in the blood? Sodium carbonate, carboxyhemoglobin, bicarbonate, in the form of CO2. So option C is correct, bicarbonate. In what form? Bicarbonate form is CO2 mainly transported in the blood. तो बाइकार्बोनेट का जो फॉर्मूला होता है HCO3 नेगेटिव. Next question is leukocytes contain which of the following greater quantity? Leukocytes contain which of the following in greater quantity? Basophils, neutrophils, eosinophils, monocytes. Option B is correct, neutrophils. 50 to 70%. Leukocytes contain which of the greater quantity? Neutrophils 50 to 70%. Total leukocyte count. So next question is which of the following blood groups comes under the category of universal recipient? तो ये तो ऑप्शन रेसिपिएंट बोला है. which of the following blood groups comes under the category of universal recipient? तो ऑप्शन B is correct, AB. Next question is chordae tendineae. Chordae tendineae is found in which part of the heart? Sinus, venosus, uricus, aorta, ventricles. Option D is correct, ventricles. Chordae tendineae is found in ventricles part of the heart. Next question is choose the option which is not correct. AB node is called pacemaker or heart. The human heartbeat is myogenic. The tricapsid valve is present between right auricle and left ventricle. Lymph is rich in WBC. Option A is correct. Choose the option which is not correct. Option A is correct. AB node is called pacemaker or heart. So which of the following is not correct? तो साइनोएट्रियल नोड जो है साइनोएट्रियल नोड को बोला जाता है पीसमेकर और हार्ट, पीसमेकर ऑफ हार्ट. साइनोएट्रियल नोड को बोला जाता है पीसमेकर ऑफ हार्ट. ऑप्शन ए इज इनकरेक्टली मैच एंड बाकी सब करेक्ट है. ह्यूमन हार्ट बीट इज मायोजेनिक. ट्राइकैप्सिड वाल्व इज प्रेजेंट बिटवीन राइट यूरिकल एंड राइट वेंट्रिकल. लिम्फ इज रिच इन WBC. नेक्स्ट क्वेश्चन इज eosinophils.
eosinophils has 2 to 7 lobes, are responsible for protection against infection, are significant in allergic reaction, play important role in detoxification. तो eosinophils option C is correct. Eosinophils are significant in allergic reaction. Next question is, which of the following statement is not correct? Which of the following statement is not correct for different blood vessels in normal human beings? No semilunar bulb is present along arteries. Blood flow is rapid in capillaries. Blood flow is slow in veins. Capillaries have high blood volume. So option B is correct. Which of the following statement is not correct? तो for different blood vessel in normal human beings, ये जो statement है is not correct for different blood vessel in the normal human beings. तो ब्लड फ्लो जो है इसलिए करेक्ट नहीं है क्योंकि ब्लड फ्लो इज नॉट रैपिड, ब्लड फ्लो कैपिलरीज इज स्लो. यह अगर स्लो होता है रिपीट की जगह तो करेक्ट हो जाता है ये स्टेटमेंट. तो ऑप्शन बी इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्राइमरी एंड सेकेंडरी इम्यून रेस्पॉन्सेस आर कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ टू स्पेशल टाइप्स ऑफ lymphocyte present in our body, which are primary and secondary immune responses are carried out with the help of two special types of lymphocytes present in our body are L lymphocyte, F lymphocyte, LMBP and तो ऑप्शन इसका तो डी करेक्ट होगा, बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट. एम तो नहीं होगा, एफ भी नहीं होगा, पी भी नहीं होगा, आई भी नहीं होगा. तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज एंटीबॉडी इज प्रोड्यूस्ड बाय antigenic interaction. Antibody is produced by antigenic interaction of which of the cells or organ? ऑप्शन दिया हुआ है स्प्लीन, मोनोसाइट्स, लिम्फोसाइट, ल्यूकोसाइट्स. तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, ल्यूकोसाइट्स. एंटीबॉडी इज प्रोड्यूस्ड बाय एंटीजन. एंटीबॉडी इज प्रोड्यूस्ड बाय एंटीजेनिक इंटरेक्शन ऑफ which of the cells or organ? ऑप्शन डी इज करेक्ट, ल्यूकोसाइट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज a child is of blood group O. कोई एक child का blood group है वो. तो which of these couples cannot be child's parent if their blood groups are as follows: AB, AB, AA, all of the above. तो ऑप्शन बी इज करेक्ट. ये दोनों couple जो है पेरेंट्स, इस बच्चे का मतलब पेरेंट्स नहीं है. तो क्या बोला, which of this couple cannot be child's parent? तो ये couple ये अगला ब्लड ग्रुप और चाइल्ड का पेरेंट्स नहीं है. तो ऑप्शन ए एंड ए बी ब्लड ग्रुप. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट शुड बी द ब्लड प्रेशर इफ ऑफ ए हेल्दी ह्यूमन बीइंग? व्हाट शुड बी द ब्लड प्रेशर ऑफ ए हेल्दी ह्यूमन बीइंग? तो ब्लड प्रेशर के बारे में बोला है. तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, 120 मिलीमीटर ऑफ एच जी एंड 80 मिलीमीटर ऑफ एच जी, millimeter mercury. Next question is lifespan of red blood cell is 120 days. Option C is correct. Next question is which of the following is a condition of arteriosclerosis? Arteriosclerosis. तो ऑप्शन दिया हुआ है improper beating of the heart, whether irregular, too fast or too slow. Option B, continuous or sustained rise in the arterial blood pressure. Option B. Option C, blood clot forms in the vein located deep inside our body. And option D, calcification of plaques making wall of the arteries rigid and stiff. तो बोला है which of the following is a condition of arteriosclerosis? Option D is a condition for arteriosclerosis. Calcification of plaques making wall of the arteries rigid and stiff. Option D is correct. Next question is bundle of his is a part of which one of the following organs in humans? Brain, heart, kidney, pancreas. So option B is correct, heart. Bundle of his is a part of which of the following organs in humans? Heart. Next question is
lifespan of RBC is 120 days. Next question is, human heart normally beats per minute. So 72 times. A human heart normally beats per minute 70 to 72 times पर मिनट में होता है हेल्दी मतलब हेल्दी एडल्ट को, पर्सन को. तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कंटेन न्यूक्लियस. व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कंटेन न्यूक्लियस. तो नीचे दिया हुआ कौन सा न्यूक्लियस को कंटेन नहीं करता है. तो ऑप्शन दिया हुआ है ए मैच्योर ह्यूमन एरिथ्रोसाइट, न्यूट्रोफिल्स, मैक्रोफाज, योजिनोफिल्स. ऑप्शन ए इज करेक्ट. ए मैच्योर human erythrocytes does not contain nucleus. Next question is, which of the following vitamins is used to prevent bleeding. Which of the following vitamins is used to prevent bleeding. तो ऑप्शन दिया हुआ है प्रिवेंट ब्लीडिंग, विटामिन ए, सी, B12, के. ऑप्शन डी इज करेक्ट, विटामिन के. फाइलोक्विनाइन, विटामिन के का केमिकल नेम है फाइलोक्विनाइन. यह प्रिवेंट करता है ब्लीडिंग को. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, one hemoglobin carry how many oxygen atom. One hemoglobin contain how many oxygen atom. Option A is correct, 4 oxygen atom. Next question is, lymphoid tissue is found in. Lymphoid tissue is found in lymph nodes, tonsils, thymus, all of these. Option D is correct. Lymphoid tissue is found in all of these. Next question is, calcium is essential for blood coagulation, synaptic transmission, neuromuscular action, all of the above. तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, कैल्शियम इज एसेंशियल फॉर ब्लड कोagulation, synaptic transmission, neuromuscular action, all of the above. Next question is, the bulb present between right atria and right ventricle. ऑप्शन दिया हुआ है सेमिलुनर बाल्ब, ट्राइकप्सिड बाल्ब, में मिट्रियल बाल्ब, बाइकप्सिड बाल्ब. तो ऑप्शन B is correct, tricuspid bulb. The bulb present between right atria and right ventricle. Option B is correct, tricuspid bulb. Next question is, pulmonary vein carries deoxygenated blood, oxygenated blood, mixed bulb, none of these. Option B is correct, pulmonary bulb carries oxygenated blood. Next question is, the chamber of the heart which receives oxygenated blood from the lungs is the. तो क्वेश्चन 82, chamber of the heart which receives oxygenated blood from the lungs is left atria, right atria, left ventricle, right ventricle. तो ऑप्शन A is correct, which receives oxygenated blood from the lungs is the left atrium. Next question is, pulse rate above the normal rate is called. तो tachycardia. Option D is correct. Pulse rate above the normal rate is called tachycardia. तो pulse rate बोला है above 100 beats में अगर जाए तो बोला जाएगा tachycardia. Next question is, the term used for the process of RBC formation is. Process of RBC formation is apoptosis, hemodialysis, erythropoiesis, and hematopoiesis. Option C is correct. The term used for the process of RBC formation is option C, erythropoiesis. Erythropoiesis is the process of red blood cell formation. Next question is, the artery commonly affected during the myocardial infarction is. Artery commonly affected during myocardial infarction is renal artery, coronary artery, hepatic artery, carotid artery. The option B is correct. The artery commonly affected during myocardial infarction is coronary artery. Next question is, abnormal accumulation of fluid in pleural space is called pleural embolism, pleural effusion, pleural infusion, and emphysema. The option B is correct, pleural effusion. Abnormal accumulation of fluid in pleural space is called pleural effusion. Next question is, a healthy human being has a blood pressure. So option B is correct, 120 millimeter of Hg and 80 millimeter of Hg. Option B is correct.
Next question is, amount of glucose in the blood is regulated. Amount of glucose in the blood is regulated. Amount of glucose in the blood regulated due to somatostatin, due to glucagon, due to gastrin, due to insulin. Option D is correct, due to insulin. Amount of glucose in the blood is regulated due to insulin. Next question is, blood group is due to a specific antigen on the surface of WBC, a specific antigens on the surface of RBC, a specific antigen on the surface of RBC type of hemoglobin in blood. So option C is correct. Blood group is due to a specific antigen on the surface of RBC. Blood group is due to a specific antigen on the surface of RBC. Option C is correct. Next question is, the effect of nicotine on blood circulation is, it mixes with blood, it contracts the arterial wall, it decreases the blood pressure, it decreases the carrying of oxygen to lungs. So option B is correct. The effect of nicotine on blood circulation is, it contracts the arterial wall. Effect of nicotine in blood circulation. Option B is correct. It contracts the arterial wall. Next question is, which of the following converts fibrinogen into soluble fibrin? Thromboblastin, thrombin, prothrombin, CO2 positive. So option B is correct. Thrombin converts fibrinogen into soluble fibrin. Next question is, upper chambers to heart are known as atria, ventricles, sinoatrial nodes, and AB node. तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन ए इज करेक्ट. अपर चैम्बर्स टू हार्ट आर नोन एज एट्रिया. अपर चैम्बर्स टू हार्ट आर नोन एज एट्रिया. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which of the following is a type of agranulocyte? Which of the following is a type of agranulocyte? Neutrophils, basophils, eosinophils, and lymphocytes. Option D is correct, lymphocyte. Lymphocyte is a type of agranulocytes. Next question is, which of the following is affected by the infection of Wucheria bancrofti? Lymphatic vessel, respiratory system, nervous system, blood circulation. Option A is correct, lymphatic vessel. Which of the following is affected by the infection of Wucheria bancrofti? Lymphatic vessel. Option A is correct. Next question is, sources of antibodies in our body are T lymphocyte, B lymphocyte, neutrophils, basophils. Option B is correct, B lymphocyte. Sources of antibodies in our body are B lymphocyte. Next question is, which one of the following molecules is finding a weakly acidic substrate of unknown function in the nuclei of human WBC? Nucleic acid, nuclein, protein, chromosome. तो ऑप्शन दिया हुआ है, तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए इज करेक्ट. क्वेश्चन बोला है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स इज फाइंडिंग वीकली एसिडिक सबस्ट्रेट ऑफ अननोन फंक्शन in nuclei of RBC, nuclei of human RBC. Option A is correct, nucleic acid. Next question is, during chloride shift, the electrical neutrality of RBC is maintained by diffusion of chlorine from plasma to erythrocyte, active transport of K positive from erythrocyte, diffusion of H positive ion from plasma to erythrocyte. Option D, none. So option A is correct. During chloride shift, the electrical neutrality of RBC is maintained by option A, diffusion of chlorine from plasma to erythrocyte. During chloride shift, the electrical neutrality of RBC is maintained by. Next question is, pH of human blood is 7.4. Option B is correct, 7.4. ये slightly alkaline है. And next question is, cardiac troponin level helps in diagnosis of myocardial infarction, congestive cardiac failure, ventricular tachycardia, and atrial fibrillation. Option A is correct. Cardiac troponin level helps in diagnosis of myocardial infarction. Cardiac troponin level helps in diagnosis of myocardial infarction. तो यह था टोटल 99 क्वेश्चन इस चैप्टर का. तो थैंक्स फॉर वाचिंग. नेक्स्ट और एक वीडियो में मिलते हैं.
एंड जितने भी क्वेश्चन डिस्कस किया गया है किसी न किसी एग्ज़ाम में आया हुआ क्वेश्चन है, दूसरा यूनिवर्सिटी और स्टेट का क्वेश्चन है ये सब। तो एनसीईआरटी को ही फॉलो करते हैं। और नेक्स्ट और एक वीडियो में मिलते हैं।